सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी एकेडमी। आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द वेस्ट का टेक्सचुअल क्वेश्चंस का टेक्स्ट बुक में मार्किंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। Walter was the founder of modern historiography. Dash wrote the book entitled Archaeology of Knowledge. Michael Foucault wrote the book entitled Archaeology of Knowledge. B1. Identify and write the wrong pair in the following set. In this set, the wrong pair is Karl Marx. Discuss on the method. Question number 2. Explain the following concepts. First one is dialectics और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा पेज नंबर 4 पे पहला कॉलम। इट इज़ गुड टू नो वाला। फर्स्ट वन आपको क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू द हेगल ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ any event happens in the term of two direct opposites। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग वन नीड्स टू अंडरस्टैंड बोथ ट्रू एंड फॉल्स, सिमिलरली गुड एंड बैड। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन द ऑपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स। ये होगा आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? In this method, a theory was proposed at the beginning, which is called thesis। Sorry, ये कट हुआ थोड़ा, इसका स्पेलिंग है THESIS। Then another theory is proposed, which is contrary to the thesis. It is called antithesis। After a thorough logical discussion of both, a new thesis is proposed, which includes the gist of both the thesis and the antithesis. This process of arriving at the new thesis is called synthesis। This will be of third point। अभी 2.2 का एनालाइज स्कूल, इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज है उसके, पेज नंबर 5 पे एनालाइज स्कूल। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा? At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as analyst school। Second point क्या रहेगा? Analyst school gave a new direction to history writing। It was recognized now that history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective physiology, etc. in this historical times। यह होगा आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? द एनालाइज स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। समझा आपको? फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकंड पॉइंट एनालाइज स्कूल से लेके राइटिंग तक। थर्ड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इट वॉज रिकॉग्नाइज से लेके टाइम्स तक। फोर्थ पॉइंट द एनालाइज स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। दिस विल बी ऑफ फोर्थ पॉइंट। तो अभी नेक्स्ट वन 3.1 हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्राइवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। इसका आंसर पेज नंबर 5 पे ही है। द राइटिंग ऑफ साइमन डी बियोवर हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male-dominated perspective of history। Second point. Third point. It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life, such as their employment, their role in the trade union, institutions
working of their cause, their family life, etc. This will be your third point. 3.2 टेक्स्ट बुक में बरोबर से नहीं है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर मास्टर की में दिखाती हूँ. सो ये है 3.2. फॉकल कॉल्ड हिज मेथड एज द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. इसका आंसर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप. तो इसमें आप फर्स्ट लिख सकते हैं लेपर्ड वॉन रांके, ये नाम लिख सकते हैं फर्स्ट. सेकेंड ये नाम लिख सकते हैं राने डेस्कार्टिस. थर्ड ये नाम लिख सकते हैं वॉल्टर. फोर्थ ये नाम लिख सकते हैं कार्ल मार्क. अभी क्वेश्चन नंबर 5 द फर्स्ट वन क्या है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थियोरी. तो इसका आंसर है पेज नंबर 4 पे. 5.1 अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट ओनली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल. ये आपका फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल्स नीड ऑफ people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. Second point है ये आपका. Third point, the accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. This will be your third point. This inequality causes a division of the society into classes leading to class struggle. This will be your फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द मार्क ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेस. दिस विल बी योर फिफ्थ पॉइंट. सिक्स्थ पॉइंट, दास कैपिटल, a text written by him, is the most referred book all over the world. This will be your sixth point. So next question क्या है, 5.2 what are the 4 characteristics of modern historiography. इसका आंसर है पेज नंबर 2 पे. 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. ये आप जैसे है वैसे ही पूरा लिखना है. फर्स्ट वन, its method is based on the scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. These questions are anthropocentric. It means that these questions are about the deeds of members of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any interrelation between the divines and human deeds. Third point, answers to these questions are supported by reliable evidence. Fourth point, history presents a graph of mankind's journey with the help of past human deeds. ये हुआ आपका 5.2. 5.3 what is feminist historiography. तो ये जैसा बताया मैंने आपको वैसा ही feminist historiography में भी आएगा. दोनों क्वेश्चंस का आंसर यही है. 3.1 का भी सॉरी मैं लगाना भूल गई. 5.3 का भी वही है. एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रांकेस पर्सपेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री. सो इसका आंसर टेक्स्ट बुक में बराबर से नहीं दिया था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मास्टर की पे लाई. तो इसका आप आंसर देकर स्क्रीनशॉट ले सकते. 5 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है. अगर आज ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ऐसी और टेक्सचुअल क्वेश्चंस की मार्किंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.